Hello everyone. Today we will be discussing one chapter of statistics, that is your correlation. So let us first understand the meaning of correlation. Correlation measures the degree of relationship between two variables. दो वेरिएबल में कितने रिलेशनशिप है, किस प्रकार का रिलेशनशिप है, to what extent, that we can measure with the help of correlation. Now let us see what are the kinds of correlation. This correlation may be positive and negative correlation, linear and non-linear correlation, simple and multiple correlation. What is positive correlation? In case of positive correlation, both variables change in same direction. दोनों वेरिएबल एक साथ बढ़ेंगे, दोनों वेरिएबल एक साथ घटेंगे. दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन. सपोज मार्केट में जो प्राइस ऑफ ए कमोडिटी राइजेस, उसका जो क्वांटिटी डिमांड वो बढ़ता है. सिमिलरली प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस, द क्वांटिटी सप्लाई बढ़ता है. तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड उसका क्वांटिटी सप्लाई दोनों पॉजिटिवली रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड. सो दिस इज व्हाट पॉजिटिव कोरिलेशन. सो द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी and its quantity supply both are positively related. Second one is negative correlation. In case of negative correlation, दोनों वेरिएबल ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज होंगे. अगर एक वेरिएबल बढ़ेगा सो दूसरा वेरिएबल विल फॉल डाउन. सो दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन. व्हाट इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन. अगर प्राइस ऑफ ए कमोडिटी राइजेस, उसका क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस. सो दिस इज व्हाट नेगेटिव कोरिलेशन. नेक्स्ट वन हम देखेंगे लिनियर कोरिलेशन. लिनियर, व्हेन both variables change at a constant proportion rate, so that is called linear correlation. अगर दोनों वेरिएबल को कोई ग्राफ में आप रिप्रेजेंट करेंगे, then you will be getting a straight line. Next one is non-linear. Non-linear, when two variables change at a different proportion rate, at a different rate, it is called non-linear. Now let us see the meaning of simple correlation. Simple correlation study the relationship between two variables. जब दो वेरिएबल में हम रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे, इट इज कॉल्ड सिंपल कोरिलेशन. एक कमोडिटी का प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में क्या रिलेशनशिप है, दैट कम्स अंडर सिंपल कोरिलेशन. Next is your multiple correlation. In case of multiple correlation, we can measure the degree of relationship between more than two variables. When we measure the degree of relationship between three variables or more than that, that is called multifold correlation. कोरिलेशन का जो वैल्यू है, दैट लाइज इन बिटवीन +1 से लेकर -1 का अंदर कोरिलेशन का वैल्यू रहेगा. प्लस मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन, माइनस मतलब नेगेटिव कोरिलेशन. ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू, कोरिलेशन में बी डिफरेंट टाइप्स. नंबर 1, परफेक्ट कोरिलेशन. In case of perfect correlation, it is +1 to -1. +1 मतलब perfectly positive correlation. -1 perfectly negative correlation. Next is your high degree positive. 0.752 +1 इसका वैल्यू हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन. नेगेटिव में -0.752 -1 हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन. मॉडरेट में
0.25 to 0.75 ये पॉजिटिव, नेगेटिव में -0.25 टू -0.75, लो कोरिलेशन 0 to 0.25, this is positive. Similarly 0 to -0.25 negative. No correlation or zero correlation, where the value of correlation is 0. So these are all about the types of correlation on the basis of their value. Let us try to understand what is the meaning of perfect correlation. When two variables changes at a constant ratio in the same direction, it is called perfect positive correlation, जहाँ पर correlation का जो value है that is your +1. Perfect negative correlation, when both variable change at a constant ratio but in opposite direction. अगर ग्राफिकली आप इसको शो करेंगे, you will be getting a negatively sloped straight line where the value is -1. You see the value is -1. Perfect positive correlation में +1, perfect negative correlation में -1. Correlation का जो range है value का, that lies in between +1 to -1. 0 में no correlation, +1 में perfectly positive correlation, -1 में perfectly negative correlation. And this 0 is known as absence of correlation or no correlation. And the degree of correlation, it may be high, moderate or low. High degree में 0.75 to 0.9, moderate में you see 0.5 to 0.6, low में it lies in between -0.5 to 0.5. So these are the types of correlation on the basis of their values. The question is that how can you measure the degree of relationship between the two variables? The degree can be measured by three methods. One is Pearson's coefficient of correlation, the first one. Pearson's coefficient of correlation. Second one, rank or Spearman's coefficient of correlation. Third one, scatter diagram or dot chart. Let us first understand how can you measure correlation coefficient with the help of the method Pearson coefficient of correlation. Pearson coefficient of correlation can be measured by the formula R sigma xy n into standard deviation of x into standard deviation of y. N means pair of x and y. So where small x is x minus x bar and y is equal to y minus y bar. This formula can be reduced a easy one, that is your sigma xy by sigma x square into sigma y square square root. So this formula is used to calculate Pearson's coefficient of correlation. Sigma xy by sigma x square into sigma y square, where this x is equal to x minus x bar and y is equal to y minus y bar. This can be solved. Let us take one example here.
X series and Y series are given. You see X and Y. So formula is sigma x square, sigma xy by sigma x square into sigma y square square root. तो you need स्मॉल x, हम x माइनस एक्स बार निकालेंगे. x बार क्या है? मीन. तो पहले x सीरीज का मीन कैलकुलेशन करो. सिग्मा x बाई n 35, सिग्मा x n 7, तो 35 बाई 7 इज 5, x बार 5, x माइनस एक्स बार x माइनस 5. ये डेविएशन सीरीज आपको मिलेगा. दिस इज कॉल्ड स्मॉल x. इसका स्क्वायर निकालेंगे. दिस इज योर एक्स स्क्वायर. जो डिफरेंस मिला x माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर, उसका टोटलिंग करो. दिस इज सिग्मा एक्स स्क्वायर, स्मॉल एक्स स्क्वायर. y दिया हुआ है. y का मीन फाइंड. सिग्मा y बाई एन, सिग्मा y बाई एन 70 बाई 7 इक्वल टू 10. y मीन का मीन ऑफ y सीरीज. नेक्स्ट y माइनस y बार, स्मॉल y उसका स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड y स्क्वायर. टोटलिंग 130, सिग्मा y स्क्वायर 130. लास्ट कॉलम स्मॉल एक्स वाई को इंटू करो. एक्स कॉलम एंड वाई कॉलम दोनों को इंटू करो. -3 इंटू -6 18, -2 -3 plus 6, like this you calculate and take its totaling 58. So sigma xy is 58. So the formula is sigma xy r is equal to sigma xy by sigma x square into sigma y square का स्क्वायर रूट. ये फॉर्मूला है. xy 58, x square sigma x square is 28, sigma y square is 130, and if you solve it then you will be getting the answer, that is your 0.96. This is positive. 0.96. You know the value of correlation lies in between -1 to +1. So the answer is 0.96. That means it is your correct answer. This is how you can calculate Pearson's coefficient of correlation by actual mean method. So this is all about the meaning of correlation and its calculation by Pearson coefficient of correlation. In the next class we will be discussing Spearman's rank correlation coefficient. Thank you.